ओके सो लास्ट टाइम ये दोनों टास्क लास्ट में रखे थे कंप्लीट करने के लिए, बट ये सैटरडे के थे एंड टुडे इज मंडे. आई रिशेड्यूल्ड देम. We should start with HLD2. So we had an HLD. I'll show you. We had HLD in project description. This was the HLD diagram, which wasn't a HLD diagram, but we had these things. We had services, we had gateway, front end, orchestration, DBs, vector stores, and even event bus. But right now we are gonna define a proper high level design for these. So we'll go and create a new draw.io. Name it HLD. और सर्विसेज बनाते हैं. तो पहली सर्विस होगी यूजर सर्विस. इससे नहीं बनाते हैं. ये रही सर्विसेज. यूजर सर्विस, user service. Then we have profile data fetch service. So I'll write profile data fetch PDF profile data fetch service. Then we have template service. We have resume generation service, and I would say that resume service. We have AI edit service. AI edit service. And we have PDF service, PDF render service. So PDF service. Payment service, chat history service. Payment service and chat. I'd say chat service. Sounds wrong though. Let's see. We have databases for them. We have API gateway. So take this, make it no. Take this one, and it is our API gateway. Then we have an event bus and an orchestration layer. So same goes for orchestration layer.
विल सी, इवेंट बस का भी देखते हैं। तो हमारा वेब ऐप है, देन वहाँ से एपीआई गेटवे का कॉन्टैक्ट, देन वहाँ से ऑर्केस्ट्रेशन लेयर कॉन्टैक्ट, ठीक है, ऑर्केस्ट्रेशन लेयर। उसके बाद में कॉल्स। तो उसके बाद में होगा कैसे वो देखना है। कितने पे है? 6 मिनट पे। तो अभी मैं इसको, उससे पहले HLD की जगह इसको सिस्टम आर्किटेक्चर रख लेता हूँ। एंड ये हो गया, ये हो गया। इसको रेट लिमिटर भी कह सकते हैं। लिमिटर and this will talk to user. Basically, orchestration layers workflows. Workflow orchestration. अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना हो तो orchestration ऐसा होता है when we create a workflow where we need to call different services. For example, we need to call multiple services. In our case, it will be like when a user asks to maybe download a PDF, then we have to check for user service in order to verify their role. We have to go for um, PDF service. Like we have to check if we have debounced all the changes, कि अगर यूज़र ने कोई चेंज करें यूआई में एंड मे बी वो कुछ टाइम के बाद में डिबाउंस होकर के जाते हैं सर्वर पे सेव होने, तो सारे चेंजेस जो है वो सिंक हो जाने चाहिए, उसके बाद में ही हमको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो इन दैट केस वी हैव टू गो थ्रू अ वर्क फ्लो। दूसरा कुछ हो सकता है कि यूज़र ने प्रॉम्प्ट लिखा और यूज़र ने एक प्रॉम्प्ट डाला एंड उससे हमको चेंजेस करने हैं, तो वो चेंज होने के लिए पहले वी हैव टू हिट द रेज्यूमे जनरेशन सर्विस में भी, एंड वो रेज्यूमे जनरेशन सर्विस जो होगी वो एआई वाली सर्विस को हिट करेगी, एंड देन एआई वाली सर्विस जो है वो वापस से रेज्यूमे जनरेशन सर्विस को देगी जो भी आउटपुट होगा। एंड मे बी इस बीच में कहीं पे टेम्पलेट से भी बात हो। तो ये सब वर्कफ्लोज डिज़ाइन करने के लिए हमको चाहिए होता है किसी ना किसी तरीके का पैटर्न। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कहीं एक जगह हमने लिख लिया कोई एंड पॉइंट कि हमको चाहिए स्लैश एडिट, और उसके बेस पे हम लोग एडिट कर रहे हैं। खाली जैसे ही एंड पॉइंट हिट होगा एक के बाद एक वी मेक HTTP कॉल्स, we make HTTP call over here, then this call maybe here, like that. Just an example. Whereas अगर हमारे पे
दूसरा पैटर्न होता है जो कि है कोरियोग्राफी। तो हम एडिट सर्विस बोलते हैं एंड देन एडिट को कॉल करते हैं। वहाँ पे कोई ऑर्केस्ट्रेटर नहीं होता है। सो दिस इज आवर orchestrator, but we don't have an orchestrator in choreography. So we just push everything in a queue, and वो क्यू से अपने आप जो इवेंट्स होते हैं वो ले लेते हैं, जो भी सर्विसेज होती हैं। दिस वर्क्स ऑन मैसेज क्यूज एंड ऑल। अगेन क्लियर आइडिया नहीं है मेरे को कि ये प्रॉपर कैसे काम करता है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स कि वी जस्ट पुश इट एंड वी सेंड बैक द रेस्पॉन्स टू यूज़र कि हमने उनका रिक्वेस्ट पुश करा एंड हमने रेस्पॉन्स भेज दिया है, एंड देन पीछे का काम हो रहा है। दिस इज सम वॉट अ यूज़ केस जहाँ पे कोरियोग्राफी काम होती है, और दिस इज़ अ यूज़ केस जहाँ पे कि हम काइंड ऑफ रेस्पॉन्स, प्रॉपर रेस्पॉन्स के लिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑर्केस्ट्रेशन काम आएगा। आई वॉज लुकिंग एट सम ऑफ द डॉग्स कि किस तरीके से हम लोग हाई लेवल डिज़ाइन बना सकते हैं अच्छे से। इसके अंदर ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल था जिसमें कि वी हैव अ लोड बैलेंसर और उसके अलावा वी हैव क्यूज़। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही हम पैटर्न फॉलो करें वर्क फ्लो का। वी कैन फॉलो कोरियोग्राफी एज वेल एज ऑर्केस्ट्रेशन, डिपेंड्स एक्चुअली। तो अगर हम इसको डिज़ाइन करें तो हमारे पास में ये सारे सर्विसेज है। इसमें से वर्क फ्लो जो होगा, लेट्स कीप इट सिंपल, कि जहाँ पे हमको ये ट्रिगर करना होगा विल यूज़ दैट हियर। उसके अलावा सब रिक्वेस्ट जो है वो रेट लिमिटर के थ्रू जाएगी। तो वी हैव दिस जहाँ पे होगा, तो वेब है, वेब से रेट लिमिटर के थ्रू रिक्वेस्ट आई, एंड एक रिक्वेस्ट डायरेक्ट यूज़र सर्विस पे जा सकती है कि ऑथ रिलेटेड रिक्वेस्ट है, तो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। हमको कोई वर्क फ्लो फॉलो नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू मूव इट हियर। और दूसरी रिक्वेस्ट हो सकता है कि ये हो गया, और दूसरी रिक्वेस्ट हो सकती है जो हमको पेमेंट रिलेटेड हो। तो पेमेंट रिलेटेड सीधा यूज़र से होते हुए पेमेंट की तरफ जाएगी, चैट, एंड दीज आर गोना कॉल देमसेल्व्स। जैसे कि हाँ, प्रोफाइल डेटा फेच सर्विस इजंट गोना बी कॉल्ड। हाँ, ये भी कॉल होगी जब यूज़र रिफेच करेगा, तो इसको भी रख लेते हैं यहाँ पे। Instead of this, you can just maybe use एंड प्रोफाइल डेटा फेच भी हो सकता है थ्रू यूजर एज वेल एज उसके अलावा सीधा अगर वर्क फ्लो कोई हो, ट्रिगर हो, तो जैसे सबसे पहला एडिट का वर्क फ्लो हुआ, तो उसमें हम मे बी यूज़र सर्विस को पहले कॉल करेंगे कि वो यूज़र सर्विस को कॉल करेगा। यूज़र सर्विस को कॉल करा एंड इसको हम नाम दे देते हैं स्लैश एडिट। तो जब ये एडिट रिक्वेस्ट आएगी तो हम यूज़र को कॉल करेंगे जस्ट टू चेक
और वैसे ऑथेंटिकेट हम लोग इधर ही कर लेंगे, आइडिया तो यही है। स्लैश ऑथेंटिकेट, we can authenticate here only. You don't have to call user service again and again. तो edit prompt आएगा हमारे पास में, हमको वो prompt को सीधा AI को देना है। तो बट बिफोर दैट हमको कलेक्ट करना पड़ेगा कि टेम्पलेट कौन सा है, एंड देन अभी करंटली क्या क्या है रेज्यूमे में। तो उसके लिए पहले रेज्यूमे सर्विस कॉल करनी पड़ेगी, which is here. तो we are gonna call resume service, और resume सर्विस जो है वो टेम्पलेट सर्विस को कॉल करेगी आई गेस। यहाँ पे एंड टेम्पलेट सर्विस से मे बी इन्फो लेने के बाद में इट विल कॉल AI एडिट सर्विस। और ये हमको देगा रेज्यूमे सर्विस को, एंड उसके बाद में रेज्यूमे सर्विस वापस से रेस्पॉन्स कर देगा। तो काइंड ऑफ एक टिपिकल वर्क फ्लो हो गया ये। नॉट श्योर दो स्टिल। उसके अलावा लेट्स गो थ्रू सम फीचर्स मे बी, कि हम लोग किस तरीके से फीचर्स रखने वाले हैं। तो अगर हमको फेच डेटा फ्रॉम लिंक्स, तो ये होगा दो केस में, या तो हम खुद से करेंगे और या फिर यूज़र करवाएगा। तो लेट्स सपोज कि हम खुद से कर रहे हैं, तो ऐसे में तब होगा जब हम यूज़र सर्विस में रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद में फर्स्ट टाइम में आएगा, तो उसमें सीधा कॉल होगा प्रोफाइल डेटा फेच। ये ऐसे में हम प्रोफाइल डेटा फेच सर्विस डायरेक्टली कॉल करेंगे, और हम एक क्यू रखेंगे, पीरियोडिक क्यू, जो कि इसको कॉल करेगी। तो सर्च फॉर क्यूज, yeah, you can take this and we don't have horizontal cylinder. Cylinder, horizontal. We don't have horizontal cylinder. Okay, so this is the queue, and ये queue पीरियोडिकली चलेगी। तो लेट्स से कि क्यू चल रही है once in maybe 7 days, or not once in 7 days actually. If the data is more than 7 days, if the data is more than 7 days old, or maybe initially 10 days old, तो मे बी 10 days में हम क्यू चलाएंगे, जो कि प्रोफाइल डेटा को फेच करने के लिए काम आएगा। तो ये हो गया प्रोफाइल डेटा फेच का। हम बैकएंड में देते हैं।
तो ये क्यू हमारा प्रोफाइल डेटा फैच करेगा एंड देन अपडेट कर देगा उसको। तो प्रोफाइल डेटा सर्टेनली इस डीबी में होगा अलग से, तो वो अपडेट हो जाएगा। कीप डीबी है जो कि यहाँ से इसको अपडेट कर देगा। तो एक ये हो गया हमारा प्रोफाइल डेटा जो कि क्यू से भी होगा और यूज़र भी रिक्वेस्ट कर सकता है उसको एंड देन वो अपडेट कर देगा डीबी को। उसके अलावा हमारे पास में है एबल टू एडिट डिटेल्स डायरेक्टली इनटू रेज्यूमे। तो जब यूज़र रेज्यूमे में एडिट्स करेगा तो वी हिट द रेज्यूमे सर्विस, और रेज्यूमे सर्विस में हिट करने के बाद में व्हाट वी डू इज डिबाउंसिंग एंड सेविंग स्ट्रेटेजी। सो वी हिट रेज्यूमे, देन उसके बाद में हम लोग टेम्पलेट से गैदर करेंगे डेटा। उसके बाद में हम लोग एआई एडिट करवाएंगे एंड देन हम लोग टेम्पलेट, उसके बाद में हम लोग रेज्यूमे इसमें चेंजेस करके रिटर्न कर देंगे। तो सीधा यहाँ से ही रख लेते हैं। एंड उसके अलावा हमारे पे है प्रॉम्प्टिंग विथ एआई इज डन। हाँ, अगर हमारा प्रॉम्प्टिंग विथ एआई है तो हमको एडिट कॉल करना है, एआई एडिट सर्विस। अदरवाइज सीधा रेज्यूमे में अगर डाल रहे हैं तो रेज्यूमे सर्विस, टेम्पलेट सर्विस, रेज्यूमे सर्विस, डन। उसके अलावा एबल टू टैग एनी सेक्शन, दैट इज लाइक यूआई फीचर। एबल टू चेंज लिंक्स, तो अगर लिंक्स भी चेंज करते हैं तो वी जस्ट हैव टू fetch this data and update the DB. Able to refetch on demand, done. Download PDF support. So अगर हमारे को PDF सपोर्ट देना है डाउनलोड करने के लिए तो आइडियली हमको क्या देखना है कि हमको यूज़र लॉग्ड इन रखना है नहीं रखना है। दिस इज डिज़ाइन क्वेश्चन कि जब PDF डाउनलोड कर रहा है तो अर्लियर वी डिसाइडेड कि हम लोग लॉग्ड इन जो नहीं होगा उसको भी PDF डाउनलोड करने देंगे, बट आई थिंक इट्स बेटर कि हम ओनली लॉग्ड इन यूजर्स को ही PDF डाउनलोड करने दें। तो वी अलाउ यूजर्स हु आर लॉग्ड इन, ये भी रेट लिमिटर के पीछे ही रहेगा सीधा ही। कैन जस्ट गो हियर, लेट देम, एंड उसके अलावा व्हेन वी स्विच द टेम्पलेट, सो अगर हम टेम्पलेट स्विच करते हैं इसका मतलब है कि हमको वर्जनिंग मेंटेन करनी है। उसके अलावा तो हम नॉट दिस वन, ये वाला इधर कॉल होगा एंड यहाँ पे हम लोग ऊपर रख लेते हैं इसको। तो ये हो गया। अगर हम टेम्पलेट स्विच करते हैं तो हमको टेम्पलेट स्विच करने के लिए पहले एक रेज्यूमे वर्जनिंग बनानी पड़ेगी जैसे हमने डिस्कस करा था हियर। रेज्यूमे स्नैपशॉट टेम्पलेट रेज्यूमे वर्जन, तो इस तरीके से हमको वर्जनिंग करनी पड़ेगी जिसमें हम चेंज टाइप में टेम्पलेट स्विच रख सकते हैं। तो अगर हमको रेज्यूमे चेंज करना है तो इसके थ्रू जाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा डायरेक्ट कॉल इन रेज्यूमे। तो लेट्स कीप इट हियर एंड इसमें पहले, अरे नहीं यार, इसमें पहले प्रीमियम पोर्टल डाला, यहाँ पे हम लोग उसको एवरेज सीधा मैंने दिया बाद में। रेज्यूमे कॉल कर लेते हैं। ये रेज्यूमे सर्विस कॉल हो जाएगा सीधा, जो कि टेम्पलेट स्विच करने के लिए
इधर कॉल करेगा एंड देन अगेन हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं. दिस इज द आइडियल वन. उसके बाद में यूनिफाइड अनडू रीडू सपोर्ट. तो अगर हम अनडू रीडू करते हैं तो सिमिलरली जो इफेक्ट आएगा. वो जो अमाउंट आया वो उससे कम आना था, कुछ और पिछला भी डिवाइड है. लाइव सेव सपोर्ट प्लस सेव ऑन डिमांड. या तो 7 0 उस फॉर्म में कुछ तो लिखा होगा और भी पता ये नहीं. लाइव सेव सपोर्ट ही है. मुझे अच्छा लगा, वर्जनिंग मेरे भी को उसी अपना के थ्रू हो फाइनेंशियल जाएगा. सच ज्यादा बता. अभी हमको हो सकता है कि हेलो. टेम्पलेट में डायरेक्ट चेंजेस करने हो कि 7096 था. सीधा ही टेम्पलेट में चेंजेस करने हो तो वी हैव टू अलाउ यूज़र वो भी. तो नो नॉट यूज़र. मुंबई में बोला. टेम्पलेट में चेंजेस खाली एडमिन्स कर सकते हैं फॉर नाउ. तो लेट्स मेरे नाम पे क्या डू दिस किधर है. कि हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं एंड यहाँ पे ये भी यहाँ पे एंड एक और ये ले लेते हैं ताकि हमारा डायरेक्ट यूज़र जो है वो टेम्पलेट एडिट को भी कॉल कर सके. हाँ, ओके. तो हाँ तो काफ़ी वैसे मैसी ही सा कि हो आप गया है उसको बट सर्च दिस इज लगाना हाउ होगा. इट शुड वर्क कि यूज़र जो है डायरेक्ट टेम्पलेट सर्विस को भी कॉल कर सकता है और यूज़र तो रेज्यूमे दूसरा सर्विस को कॉल देखो करके उसमें. अपडेट्स करवा सकता है. उससे टेम्पलेट्स चेंजेस सपोर्ट हो जाएंगे. फिर चैट हिस्ट्री स्टोर विद एलएलएम. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम एडिट करेंगे तो वो चैट सर्विस से हमेशा एलएलएम ही बात करेगा क्योंकि स्टोर वगैरह करना है. तो बाकी 3 महीने के या बाद चालू होगी. या फिर हम रेज्यूमे सर्विस से आएंगे तो उनको चैट सर्विस को कॉल करके फिर एआई एडिट को कॉल करना होगा या तो ये काइंड ऑफ एक सीक्वेंस हो गया कि हमको रेज्यूमे सर्विस को कॉल करना है. रेज्यूमे सर्विस के थ्रू चैट सर्विस कॉल करनी है. उसके अलावा वी हैव टू इंटीग्रेट फ्री एंड पेड थिंग्स. तो ये हम लोग बेसिकली रेट लिमिटर के थ्रू ही देखेंगे. क्या अगर हमारा कोई रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास में और वो ऐसी चीज़ के अंडर फॉल करती है जो कि जहाँ पे हमको नहीं एक्सेस देना है तो हम लोग रेट लिमिटर के यहाँ पे ही ऑथेंटिकेट करके उसका रोल देख करके और फॉलो करना है नहीं करना है वी अलाउ देम. इसके अलावा या तो अभी के सिस्टम के हिसाब से वी हैव ऑल दिस. पेमेंट सर्विस अभी तक पेमेंट्स का कहीं पे बात नहीं करी है क्योंकि पेमेंट्स पहले नहीं था. बट अगर हमको पेमेंट्स इंक्लूड करने हैं तो दैट इज़ डायरेक्टली. और यहाँ पे हम लोग पेमेंट्स इंटीग्रेट कर सकते हैं सीधा जब भी यूज़र पेमेंट को कॉल करेगा. और पेमेंट करने के बाद में हो सकता है कि हमको कोई चीज़ अलाउ करनी हो तो मे बी उन यूज़र का जो डेटा है जिसमें प्लान्स वगैरह से होंगे तो वो चेंज करने हो तो हम लोग सीधा इसी को कॉल करेंगे. आई विल जस्ट राइट इट अगेन यहाँ पे. बावन लिखा है. तो वो हाँ हो सकता है इस वो तरीके से जो जो इट लिखा है माइट उसमें. वर्क. डेफिनेटली नॉट हाँ अच्छा प्रॉपर ही लग रहा है. डिज़ाइन और आइडिया भी नहीं है कि कैसा डिज़ाइन होना चाहिए. हाँ. बट लेट्स सी लेट्स गिव दिस टू तो एआई. कुछ कट चुका है, कुछ 1000 पे चला हुआ, पता नहीं क्या है और सिस्टम बट. और उससे वही हमको कट चुका पता है. पड़ जाएगा कि हम लोग
सही डायरेक्शन में जा रहे हैं मुझे। दो साइड से करता है, दोनों साइड से करता है, तीन साइड से करता है। तो let's go here and अभी क्या समझ में आया? log in. हाँ तो Yeah. दूसरे नाम डायलॉग बोला था। Now we can paste it here. If this is local system architecture बाकी पैसे वेरिएबल बता दो, अपने ऑपरेशन के हिसाब से आते हैं। be able to scale. कंपनी में एक साथ पूरा रेट लगाते हैं। I don't believe this बिजनेस मत much. करो वन टाइम पे। You are taking a microservice approach. ये तीन Sense पता है क्या, तीन में separations जो छह कि वर्ड इसी से लगाते पूछा हैं। है, authentication and ये तो basic चीज़ है, orchestration which is useful in a choreography based system to manage state stale data handling. Where's the database? Yeah. The diagram lacks clarity on which service यूजर का has their own सर्विस database. Ideally, in microservice, each should have, which is true. Like we क्या are doing it. microservice है? Which is the central database connected to? Yeah, we have to improve this. Label the database clarity per service or indicate if there is a shared DB. Ideally, avoid. तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पे हमको कम्युनिकेशन करनी है, जैसे यूजर सर्विस है, तो ये वाला तो HTTP कॉल ही होगा। मुझे तो देना ही नहीं। मे बी सबसे पहले डेटाबेस से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में है यूज़र का डीबी कि यूज़र डीबी, एक यूज़र डीबी हो गया जो कि यूज़र से कनेक्टेड है। प्रोफाइल डेटा फेच सर्विस भी यूज़र डीबी से ही कनेक्टेड होगा क्योंकि यूज़र का जो प्रोफाइल्स का डेटा है कुछ नहीं होगा। या फिर इट कैन हैव इट्स ओन डीबी। तो हम लोग यूज़र का आईडी के अंडर प्रोफाइल्स का डेटा सेव कर सकते हैं, तो प्रोफाइल डीबी भी अलग ही रख लेते हैं। प्रोफाइल डीबी और कैसे खत्म हो जाएगा? उसके बाद में टेम्पलेट सर्विस इज बेसिकली जहाँ पे हम लोग टेम्पलेट्स वगैरह भी स्टोर करेंगे, तो टेम्पलेट का डीबी अलग होगा। चैट सर्विस जो कि चैट्स को स्टोर करेगी, तो चैट डीबी। AI edit service, now this is gonna be a vector store क्योंकि persistent DB भी रहेगा कि रेज्यूमे का जो भी डेटाबेस होगा, अगर हम ये देख रहे हैं, let's do this and skip it. Yeah. तो रेज्यूमे का भी एक डीबी होगा, फर्स्ट उसको रख लेते हैं कर लेगा क्या नहीं, जो कि हम रेज्यूमे का परसिस्टेंट डीबी रखेंगे जिसको भी हम, और उसके अलावा हम लोग वेक्टर स्टोर भी रख सकते हैं। तो ये हो गया, उसके अलावा हमारा वेक्टर स्टोर हो गया। ये दोनों से ही कनेक्टेड रह सकते हैं। तो AI एडिट सर्विस आइडियली उसको हम लोग चैट के थ्रू ही स्टोर करने की बात कर रहे हैं, वी डोंट हैव एनी स्पेशल डेटाबेस फॉर दिस वन। तो उसके अलावा हमारे को चाहिए यूज़र सर्विस का डीबी हो गया। पेमेंट्स इज़ लाइक पेमेंट्स भी यूज़र सर्विस के डेटाबेस में ही स्टोर होगा, तो वो भी नहीं चाहिए। ओ बट वी हैव टू हैव सम डीबी जहाँ पे हम लोग पेमेंट्स की डिटेल्स एंड ऑल स्टोर करें, तो मे भी पेमेंट का डीबी चाहिए हमको।
और उसके अलावा पीडीएफ के लिए वी डोंट नीड एनी डेटाबेस। पीडीएफ जस्ट वो डाउनलोड कर रहा है, तो आई डोंट थिंक वी नीड एनी डेटाबेस हियर। प्रोफाइल डीबी में हम लोग जब भी प्रोफाइल का वो करेंगे चेंजेस, तो हम लोग सीधा प्रोफाइल डीबी में ही सेव करेंगे इसको। तो वी कैन जस्ट डायरेक्टली कीप इट हियर। बस कर दे यार, बस कर दे यार, बस चुप हो जा, अरे चुप हो जा, बस कर दे, नहीं ओके, तो हमने प्रोफाइल डीबी से सिंक कर दिया इसको, एंड उसके अलावा यहाँ पे भी हम लोग यूज़र डीबी से सिंक कर लेते हैं। टेम्पलेट का भी टेम्पलेट डीबी, चैट का चैट वाला डेटाबेस, बट रिज्यूमे का ये वाला नहीं चाहिए ना। कुछ काम करना है क्या, कुछ काम करना है आपको? अरे यार मस्ती मत कर, मेरे को नहीं सुन रहा, मैं कर रहा हूँ, चलो आप बात करता हूँ, कुछ करो, हाँ करो। रेज्यूमे के लिए वी हैव बोथ परसिस्टेंट डीबी एंड वेक्टर स्टोर। उसके अलावा पेमेंट्स के लिए हमारे पास में पेमेंट्स का डेटाबेस है, और यूज़र का पहले था एंड देन पीडीएफ का कुछ नहीं है। तो डेटाबेस कुछ इस तरीके से है। उसके अलावा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, सो अगर हम सिस्टम को ध्यान से देखें तो हमको क्यूज़ कहाँ पे चाहिए एंड नॉर्मल रेस्ट कॉल्स कहाँ पे हो सकते हैं। तो लेट्स से कि हमने यूज़र के लिए लॉगिन रजिस्ट्रेशन वाले सर्विसेज कॉल करें, तो उसमें तो हमारे को नॉर्मल एच कॉल ही चाहिए। तो आई एम एज्यूमिंग कि ये जो लाइन है, दिस इज एच कॉल, नॉट फॉर दिस। तो यहाँ पे हमको एच कॉल ही चाहिए। प्रोफाइल डेटा फेच, तो अगर हमारे को यूज़र ने बोला है कि प्रोफाइल डेटा फेच करना है, यहाँ पे हम लोग क्यू वाला लगा लगा सकते हैं, बट ये लगा रखा है, तो दिस इज ऑल राइट। टेम्पलेट सर्विस की टेम्पलेट्स में चेंजेस करें तो वो भी हमको हाथों हाथ ही चाहिए, तो वी शुड हैव दिस। रेज्यूमे सर्विस, अगर हमने रेज्यूमे में चेंजेस करे तो रेज्यूमे की चेंजेस जो है वो हाथों हाथ चैट सर्विस के पास जाने चाहिए, एआई एडिट एंड, तो ये वर्कफ्लो डायरेक्टली फॉलो होना चाहिए। वी डू वी नीड क्यू हियर, डोंट नो राइट नाउ। पीडीएफ सर्विस तो डायरेक्ट कॉल है। पेमेंट सर्विस, तो पेमेंट सर्विस में हम लोग पहले पेमेंट लेंगे, देन यूज़र अपडेट करके पेमेंट वापस से डालेंगे, पेमेंट का रिस्पॉन्स वापस से देंगे। तो दिस इज़ डन। तो बेसिकली वी आर जस्ट यूजिंग रेस्ट एपीआईज ओनली, एंड मैसेज क्यू अभी तक एक ही जगह पे है, लोड बैलेंसर ऑफ द रेट लिमिटर, योर रेट लिमिटर में भी एक्टिंग। तो हाँ, हमारा गेटवे ही है रेट लिमिटर, हम लोग उसको गेटवे भी लिख देते हैं साथ में, गेटवे। और स्केलेबिलिटी कंसर्न्स में कह रहा है कि वेब तो ऑल राइट है, रेट लिमिटर might become bottleneck, should be stateless and scalable. It will be stateless. PDF chat AI edit template, stateless service, resume service workflow could get complex, make add-on potential. But right now it's all right for the initial step, initial state. अभी तो ठीक है, ये चलेगा। प्रोफाइल फेच सर्विस, हैवी फेच लॉजिक माइट नीड क्यू बेस्ड स्केलिंग। हाँ, तो वी मे वी हैवी फेच लॉजिक माइट नीड,
Profile fetch, heavy fetch logic might need queue based scaling. तो अभी तो चलेगा, initially it's alright, but we will make changes in future. That's all. तो अभी it's alright. We have a queue here जो कि कर देगा services को call. That's alright. Then all these are like advanced things, key monitoring and logging. तो वो हम लोग लगा देंगे. We might use Prometheus. No mention of service discovery. We have to see कि ये होता क्या है. But एक बार के लिए this might works well. Let's hope. So we kind of have the clarity of HLD for project management. So project management में we can have certain deadlines कि तब तक ये करना है. तो let's just go with it. Let's have Jira setup. So now we have this resume builder Jira project. We can start adding tasks here and manage them here. So ये बना तो लिया है, but अभी करना कैसे है कि we have to start implementing things. And even before coding, there are many things remaining. We have to design database, we have to design LLDs, design patterns and all. So we can add tasks here. Um, we can add user service tasks, some of the service tasks here. Like we can start implementing login basic auth. उसके अलावा we can add LLD here. We can add database designs here. So let's just see what we can do after that. अगर हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो इट विल बी मच ईजियर फॉर अस किस तरीके से LLD एंड ऑल डिज़ाइन करना है. तो let's design another .io, और it will be very initial stage document जिसके अंदर we will have basic databases, basic tables and all. तो यहाँ पे DB basis and इसके अंदर we can have no we can have multiple DBs जो भी हमने अभी तक देखे हैं. जैसे यूज़र का DB है तो यूज़र DB we'll just, or maybe ऐसे ना करके we'll just have vertical, no, we'll just have a list here जिसके अंदर we can say user DB and user DB, and we can start adding fields here. This is users table. तो हम लोग postgres यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. यूज़र DB में यूज़र के लिए नेम हो सकता है, देन यूज़र का ईमेल, let's keep things small, lower case, name, email, password, simple. उसके बाद में we can have अगर हम हमारी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन देखें
This is user resume. This is template. Profile data. Project summaries. Chat sessions plans. Yeah, this is. So we have a user ID, which is an ID. Yeah, we can add this. User ID, name, email, password, current plan. Uh, Current plan is pro monthly, and this is the plan ID. So it's actually a plan's ID. Otherwise, we won't be able to point it. So plan ID. We will have usage, enhance calls, resume exports. Yeah, we can have certain metadata here definitely. Let's keep things simple right now. We won't add usage. We will add it eventually. And we have to store many things. So for a user, we have to map the profile DB as well. So for that, we have to add profile DB's ID, like a document's ID, and we are storing the profile data as mentioned here. So this is how we link them. So profile handlers where we have GitHub, um, LinkedIn, and this is the profile data. This one. So I just thought that maybe the better way to design the database again is to go through features, and before going through features we will just add this kind of lists here for every database. So we have user DB and we have um, profile DB, profile DB. We have template DB, template DB. We have chat DB, then uh, AI edit service. No, resume DB. AI edit, resume DB. We have vector store. Vector store, yeah, but that's not like something. So we'll think about it later. Payment DB. So we have one, two, three, four, five, six DBs. One, two, three, four, five, six. Now we can go through each feature and see what it requires, and then we will add the IDs or whatever we need in these DBs. So the first one was to fetch data from links. In order to fetch data from links, we need to store all the data and we need to store who is adding the data. So
For that, we already had this database profile DB. So in profile DB, we have to add the content, the source of the content. So earlier we mapped it. कहाँ पे गया? This is the मैपिंग जहाँ पे हम लोगों के पास में प्लेटफॉर्म हैंडलर्स है और लिंक्डइन है, उसकी स्ट्रैटेजी है कि कैसे क्या है, गिटहब है एंड ऑल ऑफ दिस एंड यहाँ पे हम लोग उसको स्टोर भी कर रहे हैं, बट दिस सेक्शन आईडी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. आई माइट जस्ट गिव कॉन्टेक्स्ट टू चैट जीपीटी फर्स्ट और उसके बाद में उसी से एनहांस करा दूँ थोड़ा सा, क्योंकि सही नहीं है अभी तक. till here. Here is here are some details which questions related. Yeah. Wow. Stored a lot of context here. Now we can actually ask it कि how can we design the database. Just define core bounded context. Yeah, even NoSQL works for the layout post templates. Start with entities and access patterns. Start by modeling the core entities first. The user resume, resume version, resume snapshot, possibly a resume template config. So what I was doing is कि I just thought कि एक ही टेबल होती है एक डीबी में, जो कि प्रॉपर बिल्कुल ही गलत है. मेरा माइंड उसी तरफ जा रहा था एंड चैट जीपीटी ने अभी रियलाइज कराया कि वी कैन हैव मल्टीपल tables. We can have a user resume table, resume version table, and all, which is obviously, but so all these are tables, and we'll start like this only. Things in think in terms of relationship conversion. So instead of instead of thinking directly like that, we'll first name them properly. कि यूज़र के लिए we just need one table, so user name it user. उसके बाद में we just user db. For profile though, in profile db we need um, we need to store different profiles. So either we can store them in a generic way, सारे ही एक ही तरीके से स्टोर हो, और या फिर हम लोग उसको कुछ और तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं. लेट्स सी, let's just ask, let's say this name profile db. How can I store
coming from different sides. And yeah, let's just say this. Uniqueness of semi-structured data. Wow. It just designed everything for us, like most of the things. And it followed very structured data here. It followed generic data here. Okay, we have an ID which is correct, which is gonna be for everywhere. We have a user ID कि कौन से यूजर के लिए बिलोंग करता है. Then we have a section ID, logical section like experience 1, 2, 3, 4, 5, 6. I am just in doubt with that. There is charge very specific and important factors. ID, logical ID groups together all the content from different sources or types that refers to same logical entity. Java experience is specific everything of it as a stable identifier for a concept. About debugging fast. One entry from LinkedIn source and another enriched then from uploaded resume. Another from manual user entry. All of them would get that section ID. Experience Google 2029. So you can group or duplicate them logically. Okay. Oh yeah. We can actually tag them. Not very clear, but alright. So we have ID and user ID. We can get that. Profile data. File data. And यहाँ पे user जिसमें भी user जिसके अंदर user ID होगा and इसके अलावा इसका खुद का ID होगा तो profile data ID. We have section ID जो कि section के लिए रखा है. Okay. Source definitely. So we have source. We have type. Yeah, type. We have content जो कि content होगा वो contents hash. This again is getting quite coupled though. Section ID. Let's just keep it bothering me. User ID, profile data ID, source type, section ID, then content. We have content hash. We have content hash. Embedding. Wait, we are storing embedding here. Not. No. Last first. This is last first. Last first. Source URL. Yeah, source URL. But I'll, let's keep it. Source URL. And then so this is the preferred chunk for this section. So for a section of experience with Google,
We will not save this. Platform metadata. Let's let's say we are getting some data of LinkedIn. LinkedIn might have experience, skills, user's name, profile, like profile name, not email, I guess. Um, so experience, then certifications, experience, certifications, uh, skills, education, name, five things. This will come in content, but if we store about experience, then section ID will be experience ID, I guess. So, so say dot users data from LinkedIn, which includes users name, experience, education, certifications, skills. How the how will the data is in this schema format. So okay, so we have profile data chunks जिसके अंदर हम लोग प्रोफाइल के चंक्स स्टोर करेंगे. मेक्स काइंड ऑफ सेंस कि LinkedIn, suppose LinkedIn gives you the following data: name, experience, we got the experience, we got the education, we got certifications and skills. So full name basics, section ID basic basics. Source LinkedIn, type basics, content, full name, content hash, and last first. We have got experience and so for every experience we will have profile data chunk for every experience. You will have one profile data chunk per experience, per project, per education item, per certification. This design reflects the core principle normalized modular source-aware profile data, which unlocks major benefits. Easily detect if one job from LinkedIn and resume are the same. Oh, you store three separate entries, and how would the parent table looks like then. Chunks store the link to parent level table. You need user profile or profile summary parent table. This table will not duplicate actual content but serve as a centralized controller aggregator over the many profile data chunks. Suggestions user profile status, current profile state, user ID, platform, last is the source
That's summary metadata, data, how it relates. Yeah, we have got platforms to get up to enable to last first status. Intentionally, we can use. Yeah, so we can have user profiles, profile data chunks. This is for audit trail. So let's go with profiles, user, and I'll keep them in a particular. I cannot. User profile db. जिसके अंदर we will have, this is like profile data chunk. So chunk, and we will have user profile, and in user profile we will have user id, user profile id. So yes, this user profile id. Then we have status idle fetching first color. Yeah, this might come handy. Status, and इसके अंदर we have enum, so just idle fetching first and error, error. In user we got, yeah, we don't have any enums here. We have enums here, we'll look at it. So status, then platforms. Can we store JSON in a table? Store JSON in store JSON data as text strings in the field. If I am using Postgres here for user profile and to store platforms, which looks like JSON, will be able store JSON SQL. Natively supports storing JSON using two column types. JSON. Oh, loaded syntax but cannot be indexed or queried efficiently. Stored binary encoded JSON, full indexing of the candidate for performance filtering. Okay. So we have status, then um,
we can store JSON in it. Um, though I don't know if it's good advice to store JSON in an SQL. Status after no platforms. So status, then platforms, and then last fetched source stats, number of chunks per source. Okay, last fetched source stats, summary metadata. I'm skipping this right now. Created, updated. Yeah, created at updated at summary metadata. Maybe I'll just keep metadata and so we included ID, user ID, status, platforms. We should include the type in it as well. I I think we should. Yeah. So user ID is an ID. It's a string. Then profile ID is also a string. Status, it is enum. Platforms, these are JSON and JSON binary. Last first is date. I guess date timestamp. Alright. But I'll keep date for now. So stats. So this is number, again date, date. This metadata might be JSON binary. Let's see. Then we have profile data chunks, and in profile data chunks we store this type of chunks. Mm, all this. We have ID, users ID, section ID, logical section like this. So section ID, source, we have section ID. This will be string. This is data ID, string. Profile data ID. Okay, so normal ID is profile data ID. Profile data chunk ID. Profile data chunk ID. Then we have source, which is enum. We have type. So type is like education, experience, and all of those. They might be enum as well. But we have content hash, section ID. So this is string. Then content. This is JSON binary content hash. I guess hash is string. Then embeddings we are skipping here. Last first last first date, source URL. This is string. Anything we are missing here? Source URL,
is primary, if this is the preferred chunk for this section. So we can store is primary in order to put an initial data in resume. So user comes, user wants to generate their resume, user gives the profile links, and we take a particular chunk, or we may say that if this is the primary chunk, then include this in the resume first, and if not, then do not. So maybe, yeah, maybe instead of is primary, we can have, let's say, priority type of field here. So we may add a chunk priority here, and we give this as enum as well. This is like high, low, medium is primary. We are not setting, but platform metadata we can have extra things, so which are related to platform only. But we don't need to store platform metadata in every profile data chunk. We can store platform metadata in the user profiles DB. So if we are storing profile of LinkedIn, then we can have metadata here. Let's platform metadata, and then so let's just ask if how can we connect our embedding through this. So I will be storing the embeddings in vector store this the persistent data. Now, how will I know if I have to if I have changes in a particular um, profile data chunk, then which embedding need to update? Detect if the content has changed. Identify which embedding ID to locate, update the. We have embedding ID as well. Compute content hash on insertion, then on refetch, compute the new hash, compare with the old hash. If different, regenerate embedding and update the vector store user. Same as profile data chunk.id. Store the embedding in the vector store as its vector ID. This way, dot update embedding. We have IDs for embedding vector store. Means major vector store allows storing a unique ID for. Okay, so this is like really good thing. I didn't knew that. I thought it's just embeddings and we don't have any ID for it. But if we have the ID, then we can store this embeddings ID in our DB, and we can update this or delete it. Nice. So we just add the embedding ID, which was right. It gave us embedding ID in the schema. Where is it? Somewhere here. Yeah, there it is, embedding. So
we don't have to actually add the embedding. Instead, we just use the embedding ID here. But we store embedding ID in this one or not? Yeah, here only. So we store string the ID as well. Just similar to profile data chunk ID. What did GPT say? Embedding ID. So it's also storing the embedding ID here for a particular chunk. So we can just directly update the embedding whenever we want or whenever we detect changes in it. Otherwise, it stays. And we don't need to make changes in any embedding. This is why the profile data chunk comes pretty handy because every time we add a new profile data chunk, we have to add the embedding for it, and that might be costly in terms of time. You know. So we only add valid and useful data there here as well. So let's see if this satisfies our feature. When a user comes, user add the profile data, we add all this data, and if we want to add LinkedIn's data, then we go here, we add user ID, user's profile ID. This is like generated one. Then we set it to idle or let's say fetching. At the end, we add, at the end, we'll complete this. So we add the platforms, we we add LinkedIn here, then we add the first time, we add the source stats, and we add. So how's yeah, so it knows how many chunks are there. So for LinkedIn, so for a LinkedIn, we have chunk for we have education and then experience and then skills. And in education, we have multiple chunks or what? Let's see. So here, when I ask for LinkedIn, this is what it showed me. So there is a chunk for education, for experience, and for every experience, it will have a chunk. And in that chunk, there will be content of that experience. So we have chunk for every experience, and we are storing source here. Alright. So source stats will have all the chunks. If we have three experience, we have three chunks for them, and different chunks for every experience, every education, every skill. Not skill, I guess. Let's see. Uh, this basics information for experience, for education, for certifications here. And then for skill as well, because they are coming from LinkedIn, so they might be users' primary skills or primary skill sets or something. So these content skills, yeah, we might add something like this. I don't know. Done. Um, so we have temporary tables for profile data, and let's complete the user DB as well. Um,
we use ChatGPT here. Okay, now it's time for user data. So we store all these. It has user ID, email name, profile, password hash, yeah, auth provider, then auth ID. It has avatar URL, created it, updated it. We will have avatar for user. Then access control, so we have role, uh, we have verified. Yeah, we need to verify. Yeah, maybe in future we can add this right now, but we may not utilize it. Then current plan, user subscription status, um, then usage, we have profile links. So for this is also JSON, right? Then we have last first attempt, last first success. We are storing last first too much, like repeatedly. Here also we stored last first, and here as well. You know, maybe we can utilize last first of a particular platform only for a particular user profile, and we do not utilize this one, but we can store this as a metadata, so we may utilize this in near future. Similarly for this, I'll pretty much follow this. Let's say, so user ID, we have this user ID, it's one of the string. We have email name password, so email is string name string password string. Sorry. um, then auth provider and auth ID, so we have, yeah, this, we have a string, no, not a string, actually enum, and auth provider, then auth ID, avatar URL, avatar URL. Now this is string. Avatar URL is string. We have created it, updated it. So timestamps. This is date. Created it. We have date. Updated it. We have role, which is enum. Enum role, and we have a role then is verified. So is verified, which is boolean, and current plan, subscription status, usage. Current plan. Uh, so this is string. I don't know if we should use plan ID or current plan.
Let's see. Current plan. Or maybe we can use plan ID though. Or current plan ID. Even better. Current plan ID. Subscription status. Enum. Subscription status. We have usage. Usage. This is JSON. Uh, we have profile links. Last first string. No, not string. We gonna have multiple of them. JSON B profile profile links and last first date last first x okay. Last first attempt for a user, last fetch attempt, last fetch success, fetch and links. So like all the data for all the data. This makes sense though, because we might want for a scheduler we want to fetch all the data for all the links. So we want to have last first attempt and then last first success. Um, what else? We can we can have enums values. So we have Google, we have GitHub, maybe um, we can have here rule. So right now it's just either not user though. What user admin suspended? Yeah, this user then admin then blocked uh, is verified. Is this true or false? Then subscription status. Subscription status is active, cancelled, trailing. We will just untick that. Active, cancelled, active, cancelled, cancel now, cancelled, active, cancelled, trailing. I don't know. Trailing means. Another person following customer product. Uh, no, I know in product terms it's something different. Trailing is maybe upcoming or past. I don't know. Right now I'll just use it. So cancel, then trailing. We have usage and all this. Then here in source we have LinkedIn, GitHub,
But if we want to associate a particular chunk to a profile, we need to have its ID in this, but we are not having it. Oh no, we do. We have section ID, which might match here. So the sections are something which we are storing in it's like type, those type file data. That's, um, type is like experience or education, basics, experience, education, certification, skills. There are a lot. Basics, education, experience. I'll just do this right now. Then we have chunk priority, maybe high, medium, low. Here, this sorted. Yeah. So maybe we are sorted with these one temporarily. Then templates database. For template database, we have template, whole template, then templates, particular section and sections, and then um, their contents and all stored in somewhere different. So yeah, for template now. Swappable to customizable by admin, mappable to a unified resume data model, versionable and taggable, configurable. Um, so ID and name and description and thumbnail URL. I don't know what are these. Then fonts, colors. So we have layout config. We have field mapping. I don't know if it's a good idea to want to allow version of template for allowed rollback. Okay. Template ID, version number, layout config, field mapping. Yeah, we will maybe we will use this one as well. But storing everything here, like layout config or field mapping, so maps unified data models to template slots, fonts, colors, layout metadata. I think we can use this template table even better. Yeah, this is what I wanted. We have description, active, thumbnail URL. Then we have template layouts. So controls, section structure, ordering, container, spacing, etc. Template layout, section order, template style. We have template fields mapping, field mappings, template versions.
So we have template which stores ID, name, description. All right. Maybe it's used. Maybe we can let user choose like use any template or directly like let them generate through AI and we can choose a template for them. I don't know what thumbnail URL might mean here. And created it, updated. That looks right. Control section, structure, ordering, continuous spacing, etc. So we have ID, then template ID, and then section order. So basics, experience, projects, um, basics, experience, projects. Yeah. Then layout type, single column. Okay. Margins created at template styles, font size, accent, color, background color, heading style, bullet style. Okay, then we have template field mapping. I wonder if we are able to fully customize the template or not, because that will be the fundamental thing. So let's just go over some place, like let's say overleaf. So go at overleaf and okay, we need to sign up. Let's sign up with Google. Team, skip, shot, yes, personally, skip, skip, no, templates, resume. Yeah. So when we go into a basic resume, let's say this one. Uh, so these are the basics. Then these are specific sections. Last updated 11 years ago. Now, for each section, we have some styling here. So, use something like this. Yeah, this might be better to design. Uh, we can we can style particular section. Uh, we can style these dashes and all these. But let's say that we do not use circles here. So we want to give flexibility. If we want to use these or we want to use something else or we want to remove them, admin should have the ability to store these. So maybe we just search for some library, um, resume library. No, the term resume I can refer to collection, not resume library actually. Maybe templates library. Plate, create, library, node, generate template files. Uh, we have a generate template file, a simple generating language, create custom boilerplate, scaffolding, skeleton, templating, code files that you need to create on. Oh, that's not we are looking for.
template based docs report creation, uh, create your custom npm template, maybe just uh, uh, react library which um, which I use. Let's just copy paste this in this in the chat. Create library which I can use in my resume builder project. I don't want to create or basically the library which can provide template UI and allow me to change in that template with all the future implementation I make. It's resume predefined resume templates. There's an interesting shell line that we have in combine for React PDF renders, React components as PDF. Uh, I need to do myself resume sections, Zo standard Jotai for state management, streaming to canvas, React resume, a complete open source resume builder built with React support multiple templates, PDF exports, the, use their template rendering logic, the way it handles JSON based. Maybe we can look at it. Um, we have these templates here and then free forever, no elementary user tracking or advertising. You can self-host the application in less than 30 seconds. But one of a condition that keeps your privacy in mind. But this is a proper resume builder. While yeah, we can use a resume builder website though want to if we don't want to handle everything by ourselves. That could be one researching thing. Or digital bring your own OpenAI API can unlock features such as improving writing, fixing spelling, and tone of your text in one click. But then we need to store the chunks though, and yeah, you can store the chunks, but the resume thing, everything can be reported. Search for it. Resume sites API. Um, I'm creating a user actually creates a resume and searching outside it that will give premium templates listing and insertion of generated resumes to the listed resume through APIs. Currently, we are developing the app in Angular 16
and PHP. Kindly let me know if you know any service like that which gives premium templates for listing of content programmatically in third-party websites through APIs. Check out this might be what you're looking for. Also, you can easily build one yourself if you want. It'll depend on the language you are using. The open source initiative to create a JSON-based standard for resumes. JSON resume is a community create JSON-based standard for resumes. We believe that the strength of JSON format makes it a good fit. Yeah, and basics work. Maybe if we have overly AP, API, do you have your own latex site? Like overly functionality. Okay. So we only have Overleaf's API for opening in Overleaf or something like that. Um, what else? There are two editing modes in Overleaf. Yeah, true. So we do not have Overleaf API that can compile latex into a PDF. Uh, the actual problem is we do not have clarity of what we are building and how much we want to build and how much we can outsource. So, not outsource not the correct word, but how much we can utilize third parties and how much we want to build ourselves. We might want to limit our building and use third party services if they are available in order to complete project in a limited time. Otherwise, it would take a lot of time. So this might be the next um, work for us to actually research for third party libraries, APIs, where we can delegate work, delegate work. Yes. Okay. Control A, Control X. I'll just do it from here. Its task, it's to do. Uh, Description is this. We do this third party APIs. Um, just me, priority highest, and due date. So I don't know. We can just collect. I'll just collect all these by myself. So I won't add a due date, but yeah, I'll complete this and come up with it. Um, let's let's look at what we have to do and look at the schemas of them. So we
are not sure about resume DB right now and template DB as well. No, we have to do the resume thing. Not not sure about the template DB, but we have to do the resume thing. But let's let's just let's just complete this payment DB. So I go here and now payment DB. Subscription plans first they will be attached with subscription integrations. We have tracking usage limits, feature get greeting. Okay, so we define plans here, we define subscriptions here, we define plan usage here, payment logs here, and invoices here. True. So let's go with plans right now and in payment DB, let's give this plan and payment DB. So it has plan ID, name, price, stores in smallest currency unit, price cents. We'll just add in cents, like dollar. So plan ID, name, uh, currency, right? So price, cents, price, cents. Um, then we have currency, currency. Um, we have interval. Yeah, it's quite important. Interval is active. Interval um, is active. Then we got features. Okay, so this is yeah what features we wanna add. But yeah, this is what plans to features. Features we have created it or maybe updated it as well. Created it and updated it. Updated it. This is a string. This is also string. Price cents. This is number. Then currency is enum. We can have maybe INR, maybe USD. Um, we have intervals, which is also enum. This is monthly, monthly, yearly. Typically, yeah, these two only. This is Boolean. Uh, this is JSON. Then we have date and date. Let's keep these. Then we want subscriptions table, which handles subscription of a user. So maps with user, I guess. So
subs- इसमें मम्मी का कुछ अलग चल रहा है अपना हिसाब। subscriptions. Um, then in subscription we can have subscriptions ID, users ID, plans ID. Um, this one, then started at, ended at. So for a particular subscription, we have all the info here. Then trial ends at Stripe customer ID, uh, Stripe ये 9 से 12 से subscription लगेगा, ID, 10 मान लेते हैं। cancelled at period and created at, yeah. वैसे So लगेगा कुछ तो ID, user ID, plan ID, yeah, these are all इससे basics. पहले We're देखो gonna क्या need क्या them. होता है। So we will be needing planning, then 9 की सुबह खेल रहा हूँ मैं। user ID, then this subscription ID. So subscription ID. Then we have ये तीन ही मेरे फोन पे status, निकाल दिया। which is enum, and these are the values: active, trailing, cancelled, past due. I don't know, past due. वो कुछ सिस्टम में These होता won't है। be a thing. Everything will be active, trailing, or cancelled, right? So subscription ID. Then we got an enum, enum of I forgot status active, then trailing, then um, active, trailing, cancel. मरेगा तो नहीं ना। I got these, then started at, ended at. चल रहा है अभी कुछ So नहीं you है। can actually keep. We we don't need created though. Okay, we don't need. Um, मर तो नहीं गई। so अरे let's बाहर keep बाहर बोल रहा हूँ बाहर। let's keep date started at इसमें आया था बट मैंने वो स्किप कर दिया था, मतलब वो ऑटो फाउंड वाला create ऑटो सिस्टम। date ended at. उसमें कुछ Then वेरिएबल आया नहीं ना। we have trial and set. एक सेकंड देखता हूँ दोबारा। Maybe a trial as well. क्या क्या कर रहा है यार इसका। Date trial and set. मस्ती मत कर। Um, Stripe customer ID, Stripe subscription ID. बात सुनो, स्टार्ट की I ये don't have any वापस idea से though. देखो ये Let's कैसे just करेगा। keep them. Stripe customer ID, then Stripe subscription ID. अच्छा ऑक्यूपाइड वाली आ रखी है। Then we have cancelled at period बहुत कम है। and मैं करता हूँ। एकदम से निकल गया। cancelled at period and uh, did not understood. It's this. Let's see. एक दो तीन चार पाँच Subscription ID. इसके आसपास तो Then खाली है। date and was it a boolean though? Yeah, cancel at period end. Okay, so we want to cancel it or not? Okay, cancel it period end and then boolean.
We might want to have this because we are designing for flexibility. Um, yeah, created and updated. Yeah. Then plan usage. आपको निकल गया knowledge. Plan usage. I don't know what's going on. तो आई मैंने कभी Plan बोल दिया मेरे को. usage. Usage. Here we gonna reference the plan. Um, then we gonna have its own ID. Then billing period start, billing period उससे end. लगा दें इनवाइट करके. So क्योंकि ID मैंने एक of बार its देखा था own. कि उन्होंने लगा था शायद वो क्या करने लगा था Plan तो मैंने usage मना करके डाल दिया ID. वो डेटाबेस हटा दिया. तो We need to have उसके बाद काम का शेड्यूल कुछ और होना चाहिए. date of billing ये काम हो गया. फिर कर देना उसको. period start ये डॉक्यूमेंट आपका हो जाना चाहिए शायद. and date billing period and याद है कि कोई एक बार टिकट बुक करना था. then we need to have resume exports. Okay, yeah, these are metadata and these are important. Resume exports, ANS calls. So number resume exports number AI enhance calls. Um, we have templates which is number template which is created it and updated. We are keeping it everywhere. We got this. Uh, then payment blocks. This is this is particularly important in terms of like transparency and all. So yeah, payment logs log. Um, we have ID, user ID, plan ID. For what plan we bought this? So plan ID. Then its ID is like payment log ID, payment log ID, पापा ने घड़ी ले ली घड़ी का इतना बोल रहे हैं. user ID. Um, we have plan ID, then user ID, amount, cents, how much amount user paid, then yeah, number, amount, cents. Mm, we need to have currency, then payment provider. मैंने भेजा था मैंने चैट में पढ़ा हुआ था मुझे नहीं. Currency is enum. Currency which can be INR, USD, then currency payment provider, payment provider payment ID, you know, payment provider, which is like Stripe
और हाँ ट्यूजडे वेडनेसडे में रेजर पे बढ़ जाती है देन ट्यूजडे तक ठीक चलेगी पेमेंट provider ID. Um, we have status, we have metadata, and then created it. So we need to have status, which is again enum, status, success, failed, cancelled, um, refunded, refunded, then payment. Um, we have metadata. We can have metadata. पता है मेरे को JSON binary metadata. Yeah. So we can have all these and looks good. डिप्लॉय तुमने नोटरी क्या था करता हूँ Uh, Invoices table, yeah, generating invoices files. I don't know if I'll keep this. Maybe we'll do it later, but yeah, looks pretty good though. We are done with the payment DB. We need to add chat DB and we need to have resume DB and template DB. Now, template DB is one which we will require if we are making our own templates. In that case, we need to store templates, fonts and colors and styles, everything. If not, if we are not making our own templates, then it's fine. देख रहा था एक वीडियो देखा था किसी की But and then we need to have resume DB of our own because we are adding all the content in here and not. So we have to work upon this one. This will have resume versions and then snapshots and all. Um, this chat DB is what which will contain the I guess chats last chat. So yeah, we can have this much. Um, let's design the chat DB now. Or ask him about the chat DB. Chat DB. हाँ उसमें बात है या उसमें वो होता है कि Chat system plays a अलग crucial इनवॉइस role अलग in पेमेंट्स भी दिखा था let's design a modular threaded conversations, context aware chat, user, AI interaction, उसमें तेरे को अपनी वो diffs, डेटा वो files. डेटा में पुश करना है We are not gonna do this right now. अभी तेरे वाले For वीडियो any में tools. फुल एप्लीकेशन नाम का कुछ पड़ा हुआ है Chat sessions represents a logical thread of conversation. Chat messages, yeah. So we need these two. Then chat function calls and chat feedback. Okay. Not we are not doing this. Drag when AI invokes tool. We can use this one. Let's see. So we obviously need chat session. It says chat session ID. This is user's ID. This is resume's ID for which we are tracking it. Then this is context type resume project skill journal. Um, वो I हाइड don't में know. आता है Chat वो session. This मैं lets you कैंसिल associate करता हूँ chats with a specific resume project or general लॉर्ड conversation. Context value, project ID or skill लॉर्ड से name, साइड बंदा title text, improve project description. Do we have the title? Chat.
Days. What does chat session means? Because we have title and all. While I don't know if title and title exists in a chat user might might chat for experience initially and then education. What is a chat session is just a container of messages between user and AI. It can be a way to group related messages together, used to provide context windowing for AI helpful, but URL and chat is better. The mixed topics as you have chat session but lose in constraints. User ID, resume ID, inferred tags, AI detected topics. No hard context type, no required. Doc, make chat message stream flat. This works if your UI doesn't work for system method. If expire or plus allow multiple open sessions. Yeah. Will I be able to read chat? This schema if I do not see any sequence links or anything for messages between LLM and user. I choose this one. Yes, you will use we have chat loading works threaded container where we have this and chat message where we have sessions IDs and how to load messages and all that. Just query session ID order by created it. Okay, so we do by this. Yeah, this is correct. I can do this. But who sent this? Acha. Okay, this also says works. So we follow this one where we have ID. So for a chat DB, we have session, chat session, chat DB. Um, we have string of chat session ID. We need to store user's ID as well. User ID. Then this could be for a resume. So resume ID. Then we have to have created it and updated it. Mm, then we need title. I don't know title is what we want to. Let's go back to this one here. Resume ID, user ID, title, optional name, string, title,
And for the topics like metadata, not enum actually. And and for topics, um, created at last active at. So to be honest, instead of this, we should have last active at, and then this is like date. Um, we did all these. Now we can have chat messages. Um, so these are chat. This is chat session. This is chat messages. ID session ID. Sender message function call. Attachments created. So chat message ID session ID. Sender and message function call attachments ID. So chat message. We need to store chat session ID, then user ID. Not exactly. We don't exactly need the user ID though. Chat message ID. Um, then we need created it definitely last active. No. Then yeah, sender. So from this we can have enum of sender. Um, it's, other than that, we can have message or whatever the message is. So message. We can have attachments here. I don't know, file attachment, one attachment, attachments. So array. This is JSON actually. We can add this one as a function call. JSON binary. Again, JSON binary. Function calls. Um, this one works. We have chat function calls here. Which is name, args. This is optional. This is alright. We won't do it right now. So our chat kind of works with these two, chat session and chat messages. Now this template DB and resume DB is remaining. I don't know how the resume DB works right here and template DB. Yeah. So we will carry on this one. Um, um, database design, and this would be tomorrow, and we need to database design. Um, Not actually tomorrow. It's already it's today.
do the timing though? Then नहीं बता रहे वो कॉल वाले database design. Uh, what we can do is maybe start setting up the LL, LLD of the system. We definitely need to improve this design, but right now we can go with it. So LLD a bit, LLD overview, overview, then to so, um, we can continue with these. Then for this we'll see. I'll just add those tasks in here which I want to do personally and which will take some time. So doesn't make any sense to do it here. So I'll do them by my own and will share with you whatever comes out. We have to validate all these and you know write which one is primary key, which one is a foreign key and all. So takes some time. Let's see how we can do that. Payment DB took a lot of tables. You knew that. And resume DB, it, it might take even 4 or 5 tables. One for resume versioning, resume snapshot, um, got chat message, chat sessions, project sources, project summaries, project. I will see that. Um, समझ गया वो देता है यार yeah, let's see.